So you mentioned कि when you did certification, after that you started. तो was it हम्म कि मतलब certification करने से आपको confidence बढ़ा? It helped you हम्म in हम्म taking it as a profession. So हम्म मतलब what do you think कि एक certification बहुत important होता है life coaching के आई लिए? थिंक एक वैलिडेशन जैसा हो जाता है दैट एटलीस्ट यू नो द प्रोसेस, यू नो इट डजंट मीन दैट यू विल बी अ ग्रेट लाइफ कोच. मैं ये भी बोलूंगी दैट सर्टिफिकेशन डज नॉट मेक यू अ गुड लाइफ कोच. लाइफ कोचिंग के लिए एक्चुअली लाइफ को ऑब्जर्व करना जरूरी है. पीपल हु ऑब्जर्व लाइफ एंड बेसिकली कैन टेक लेसन्स फ्रॉम इट and teach those lessons to people, I think those are life coaches. Certification is just a kind of validation, I think, that society needs from you, that you are, certified. और आई थिंक आपको भी खुद भी एक वैलिडेशन चाहिए होता है दैट यू नो द प्रोसेस. ओके, अदरवाइज सबने लाइफ तो सभी जी रहे हैं. हाउ एवरीबडी कैन बी अ लाइफ कोच, राइट? सो हाउ विल यू नो दैट यू ट्रूली नो योर आर्ट? इट इज लाइक you know maths, but you have done a graduation. So people know that you know maths, right? So it's like, I think, a kind of validation that is required, I think, just to be on the safe side. लाइक That's मुझे all. एक ऐसे एग्जांपल याद आ रहा है कि एक एमबीबीएस डॉक्टर होगा हु डजंट हैव एन एक्सपीरियंस एंड अ वन Hmm. हु हैज एक्सपीरियंस विल डेफिनेटली Correct. चूज द वन हु हैज एक्सपीरियंस रादर देन जिसने बिल्कुल. पढ़ के आया है. बिल्कुल, बिल्कुल. Obviously. And yet you will prefer someone with experience and degree, right? If there is a third choice, what will you choose? Will you not choose someone with experience and the degree, right? Yeah. So I think my suggestion to everybody is, I think, go get both. Go get both. Okay. Because why to मैं ये मेरा ये बिलीव करता है, don't leave any stone unturned. अगर आपको लाइफ कोच बनना है, why leave any gaps? सब कुछ करो, whatever it takes. You need a website, get a website. You need an app, get an app. You need a certification, get a certification. Do everything that it takes to become a successful life coach. एंड आई थिंक ये सिर्फ एक लाइफ कोच बनने के लिए नहीं, ये जो भी आप बनना I चाहते think हो इसके लिए बिल्कुल, एप्लीकेबल है, राइट? बिल्कुल, absolutely true, absolutely true. Everything in life is like that, right? Okay, I would like to know कि what Hmm. pulled you to participate in Mrs. Delhi NCR? मतलब कुछ तो Hmm. होगा कि यार मैं इसमें पार्टिसिपेट कर लेती हूँ अब. Hmm. तो ये सब जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, पर तुम जानती हो बिकॉज यू हैव सीन मी एज अ किड दैट आई वाज वेरी डार्क स्किन्ड. ओके, आई वाज लाइक डार्क व्हीटिश, दैट टिपिकल इंडियन इतने कलर, डार्क तो नॉट वेरी. नहीं थे. मतलब आई डोंट नो, सी दैट्स व्हाट आई रिमेम्बर अबाउट माई सेल्फ, है ना? कि मैं अपने आप को जब भी इमेजिन करती हूँ, आई वाज लाइक, व्हेन आई सी ओल्ड फोटोज, आई वाज लाइक, सो आई वाज लाइक नॉट वेरी प्रिटी, नॉट वेरी फैशनेबल, नॉट वेरी फैशन सेंट्रिक भी ये नहीं थी कुछ आपका ज्यादा. मिथ था हमें तो अच्छी लगती थे आप. सी दैट्स व्हाट ना. देखो, पॉइंट ये कि अगर बहुत सारे लोग अगर मुझे पसंद भी करते हुए, मतलब ये कहते भी होंगे कि शी वाज प्रिटी, पर मुझे अंदर वो फीलिंग नहीं आ रहा था, राइट? समथिंग इन मी वाज मिसिंग, एंड आई थिंक इट वाज बॉदरिंग मी दैट आई एम नॉट प्रिटी. And this is not that my husband, I was already married and I had a kid. और मेरा सेल्फ एस्टीम वॉज एट द लोएस्ट पॉइंट. आई वॉज फैट, आई हैड पिम्पल्स ऑल ओवर. कभी पिम्पल्स नहीं हुए थे, पर प्रेगनेंसी के बाद हो गए थे. पोस्टपार्टम डिप्रेशन वॉज देयर, एंड आई वॉज नॉट इन द बेस्ट ऑफ shape, health wise also, looks wise also. And this friend of mine, she started a company. Again, I was trying to support a friend, so she started a fitness this thing, and there were no people in her batch. So just to help her out, that okay, I will join your course. And because I joined her course, I became fit. And because I became fit, people started noticing that, she's tall, she can actually participate. So someone suggested कि Mrs. Delhi NCR is happening, why don't you participate? I was like, wow, इसको मैं ही मिली हूँ, suggesting this. But my fitness coach said, yes, do it. I'm going to train you. I'm going to make you even slimmer. I'm going to take the responsibility. You go ahead and do it. Because I supported her. See, when women support each other, right? See, this is what happens. So because I supported her, she was supporting me. And she, basically motivated me to join. And I just filled the form. I went for audition and I was selected. And I still selection तक तो ठीक था, that 1000 ladies में 60 people were selected. And वो तब तक तो मुझे लगा था, wow, I've done awesome, among 1000 people, 60 people. When I went there,
okay, with those 60 people. These 60 girls were all models, like Oh. really beautiful girls. I was like, God, there is no way of winning here. Because 1000 में तो ऐसे थे जो आपसे थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जब 60 सिलेक्ट हुए उनमें तो सारे अनबीटेबल थे. Everybody was a good speaker, everybody was fashionable, they knew makeup, they had great dressing sense, they were tall, like absolutely very. Some were doctors, pilots, business women, women entrepreneurs, all awesome ladies. Z News में anchor भी थी कोई. All of those people were there. They are still friends with me. And so then I realized that I have one thing that probably they don't have. I was a strategy consultant. Okay, which means that I can take up any problem, break it down to smaller pieces, and win one small part at a time. So that's what I did. So I won Mrs. Delhi NCR very strategically, not by my looks only, but with my brain, because that's the beautiful combination you can use, right? Heart and brain. Looks is a small part of it. So Yeah. yeah, that was great. Great experience. Really, truly changed my life. I think broke a lot of myths about myself. I also realized that I'm not a fashion guy, because after that, a lot of modeling offers and advertisement and print media things were there. But I realized I'm not into it. So I have to take it to reject it. I told you right before that I want to try everything and then reject it, not before that. राइट. मतलब मैं जस्ट इमेजिन कर रही हूँ कि Hmm. यार ना मेरे पास भी ना ऐसी फ्रेंड होनी चाहिए. मतलब You already have, no, you have me. Not only a friend, but also a senior. So we go long back, right? We go, I think जब हम एक अपने आप को भी नहीं समझते थे, तब से we are connected, in a way. And it's a destiny that we are connected again now, thanks to आई वाज Instagram. लाइक मतलब पता भी नहीं था कि वी विल एवर मीट. ये मतलब सोशल Right. मीडिया हैज लाइक ब्रॉट अस Absolutely. टुगेदर, कनेक्टेड विद आवर Absolutely. क्लासमेट्स, सीनियर्स. मतलब now world has become small. Very small. And I think the best part is now you can be connected to people you like. You know, you Correct. don't have to, it's a choice that I want to be connected to someone who's living 10 countries far from here, but I like that person. So there is a coach in UK that I really admire and I'm connected to her. We speak often, even though we will never meet probably. But because I like her, I can choose to connect to her, right? Correct. Irrespective of the boundaries, right? So, टोटली एग्री. मतलब ये वाली चीज ना पैंडेमिक की एक ब्लेसिंग है हमारे हाँ, लिए. हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल. ठीक I think what has truly supported me during pandemic is friends, you know. And something happened during pandemic. Actually, a lot of suicides were happening. Okay, and you asked me this question before. Also, I'm just restating it. The I think life coaching का certification वगैरह मैंने सब कर लिया था. But something happened inside me when I started. I saw one video of a girl committing suicide. ओके एंड दैट रियली मूव्ड मी और मुझे लगा था कि अगर हो सकता है मैं बहुत बुरी लाइफ कोच हूँ बट इफ आई कुड हैव गॉट एटलीस्ट 20 minutes with her I could have saved her life. Okay, and I realized that this is something I have to do. I have no choice but to save this young girls, especially girls, from doing committing suicide just because of a heartbreak. I can take them out of it. So I think that moved me. I think that changed me. Something happened after that, and I think the fear went just far away. है. So yeah. मतलब दैट वाज योर लाइक क्या बोलते हैं, एक बलबॉन मोमेंट होता है ना कि बस Balban moment. ये वाली Correct. चीज Absolutely. मतलब इसने Absolutely. दिस इज द हाँ मतलब वो आई वांट टू डू हाँ नाउ. as if it was like you are wasting time thinking that how good or bad a life coach you would be rather than saving the lives. I found that ridiculous that I'm scared to go up on the stage because of my fear while I can actually save someone life. मतलब मुझे इतना तो पता था, गारंटी था कि अगर मैं उससे 20 मिनट बात कर लेती तो मैं उसकी जान बचा सकती थी. तो what the hell am I doing then? If I'm not saving life, what the hell am I doing? So it was like that kind of a moment. I think that changed me. I stayed up the whole night. I kept watching that video again and again and again. I cried and cried and cried. Next day I told my friend that, boss, I'm going in. I'm going all in. देखेंगे जो कभी होता कभी है. ना कभी कभी भगवान जी ना मेक्स द सिचुएशन, Yeah. हमारी एनवायरनमेंट ऐसे बनाते हैं कि
अब हाँ बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, हाँ तो हाँ now। एब्सोल्युटली ट्रू। आई थिंक इसलिए इसे कहते हैं ना, हमको लगता है दैट वी आर ड्राइविंग इट, जो हमको लगता है कि हमने अपना पर्पस ढूंढा है, वी आर एग्जैक्टली वेयर ही वांटेड अस। मतलब इतनी बड़ी दुनिया में अगर आपको बनाया है तो सिर्फ खाने पीने और सोने और घूमने के लिए नहीं बनाया है। देर इज अ पर्पस, देर इज अ रीजन वाई यूर हियर। और आप चाहो ना चाहो वो पर्पस तो आपको फुलफिल करना ही है। आप रो रो के करो या फिर औसम तरीके से खुश रह के करो, दैट्स अ चॉइस, राइट? सो ग्रेट, मतलब वो मैं बिलीव करती हूँ कि हाँ। वो कहते हैं ना, कठपुतलियां हैं उनके हाथों की। वो एक फेमस बिल्कुल डायलॉग है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल वैसा ही बिल्कुल है। बिल्कुल। वी आर बट मुझे, एग्जैक्टली वेयर वी हाँ, आर सपोज टू बी वी आर फ्रॉम सपोज टू बी। ह्यूमन। और अगर आप नहीं भी चाहोगे ना, जैसे अगर नहीं भी चाहोगे ये करना, तो द गॉड विल मेक सिचुएशंस इन अ वे दैट इट विल हैपन। और अगर कुछ नहीं हो रहा है, अगर आप बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो और फिर भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब गॉड वांट्स यू टू वेट। करेक्ट, You know, करेक्ट, it करेक्ट। doesn't mean that you give up. It's just that he wants you to wait a little bit longer. You know, if things are not happening, To sharpen ha, it. to sharpen your things. And there is a reason why he wants you to wait. You know, things will automatically happen. When I started my life coach, because it's also my profession, I'm earning from it. So I was like, मैं अच्छा काम कर रही हूँ. People are giving so many compliments, but yeah, I'm not earning. You know, why am I not earning enough? And suddenly after 6 months my income tripled for no reason. You know, like I'm not, तब मैं marketing के courses कर रही थी because I did not know why to how to get clients, right? मैं help करने को तैयार हूँ, clients नहीं है। और फिर पता नहीं 3-4 महीने के बाद I'm not even searching for clients and I don't know how it is happening. Word of Same things mouth? are there. Was it word of mouth? I don't know. I just that people are just contacting me. I don't know how they are contacting me. Just I just get a call, and trust me, even the clientele is not like an average clientele. It's as if the clientele is also designed for me. Only people who are owning companies, big startups, scientists, people working in parliament, CTOs, CEOs. One of my client has a 500 crore company. You know, Wow. he's in news. अभी मैं नाम नहीं बोल सकती because if you search him you'll find him, because he has been covered by Indian all the biggest newspapers in India. So I cannot name him. But see, so I never tried for it, right? I cannot contact them. They are not contactable. Nobody knows their phone numbers, right? So I don't know how it's happening. It's just happening. Your So, you know, wives, your wives attract your tribe. I think God is, taking his own time and he's giving me the right kind of people, I think. Ha, you are right, absolutely. Your vibe attracts your tribe because I think when we raise our vibrations, it is not opportunities that you attract, it's the right kind of people you attract. And those people bring the right kind of opportunities for you. Correct. I think you're absolutely correct about that. And you have done like Reiki also, Reiki healing. Yep. So Yeah. I have also like heard about it, लेकिन पता Mm. नहीं ये होता क्या है. I Ah. think some invisible energy होती है जो काम करती है. Mm. So Mm. I just Mm. want to know what is the Mm. science behind Reiki and what is Reiki Mm. exactly, थोड़ा सा बताओगे? Correct, correct, absolutely. So, as you know, we are all energy, right? Do you believe in this that we are all energy? Scientifically proven, right? That we are all energy. We are made of energy, okay? There is some kinetic energy and then there is a passive energy, okay? So, when we move, there is an energy. Everything that we see, we feel, even this bottle, this painting, this laptop, everything is made of energy, okay? And energy never dies. ओके, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये सारा साइंटिफिक मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है? इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। नाउ व्हाट हैपेंस इफ द एनर्जी इज ट्रांसफरेबल, दैट मीन्स इट नीड्स अ मीडियम, ठीक है? जब हम बोल रहे हैं तो मैं आपको एनर्जी पास ऑन कर रही हूँ, राइट? It's kind of sound energy, right? So some kind of energy is going, you are saying something, it is coming to me. तो अगर बोलने से एनर्जी पास हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, तो फिर छूने से क्यों नहीं हो सकती? You agree, Yes, right? So when you touch someone there is a transfer of energy, correct? correct, अब वो एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, right. राइट? पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे, अगर जो मेरे थॉट्स पॉजिटिव हैं तो आई एम पासिंग ऑन
positive energy to you. And energy has the power of healing you because our body is made of cells, and cells is again energy. Okay, so because everything is energy, okay, so cells are also energy. That means through my energy I can create new cells in your body, मतलब right? वो मुझे समझ में आता है कि इतना टच होगा तो कुछ होगा, बट आई हैव हर्ड रेकी लाइक वर्क्स लॉन्ग डिस्टेंस आल्सो. Yes, absolutely. So let me ask you this, energy है ना, आप रेडियो सिटी पे म्यूजिक सुनते हो, there are no wires, right? करेक्ट You करेक्ट. tune into you tune into a bandwidth and you hear music. कैसे? Energy है, right? हाँ हाँ. Isn't it an energy that is coming through? यस. So Reiki is exactly like that. You are tuning into a frequency and you are sending some information to someone, गॉट right? Some गॉट energy to someone through a channel. That's the only thing. It गॉट. is 100% working. Reiki is absolutely scientific. I think as we grow, as we evolve as human beings, ये scientifically prove भी हो जाएगा बहुत जल्दी that all of this is real. Telepathy is ऑलरेडी real. प्रूव्ड ना, ये तो ऑलरेडी Yeah. प्रूव हो चुका. Pranic healing, see, अभी भी there are a lot of myths around Reiki healing की सब हुआ है और लेकिन people who have done energy kind of healing and who believe in energy works, because जैसे money is also energy, right? That's why we say कि हमारे काम में रेकी में especially there has to be energy exchange, money exchange. चाहे वो प्राणिक healing हो, especially in healing we say that there has to be a energy exchange. Otherwise the other person is in your energy debt. That means अगर मैं आपकी healing कर रही हूँ and you're not paying me or you're not healing me, that means you will be in karmic debt. Okay, मतलब आपके ऊपर उधार रह गया है और you have to get rid of it in some form. Okay, because अगर extra energy आपके body में आ जाती है which does not belong there, you will get some kind of diseases. Okay, so there has to be an exchange of energy. Okay, and energy, ये जो tuning होता है ना, ये सिर्फ intention से होता है. I focus on you and I pass on the energy. You don't need to be physically present in the same situation. Corona के time में we did group healing for corona patients. There are Reiki healers का community है जिसके साथ मैं connected हूँ. So we used to do group healing for. They used to send us age, कौन से hospital में है और क्या problem है, and we used to do एक fixed time पे. International Reiki healers भी थे उसमें and we used to do healing together. सो यू गॉट द So रिजल्ट्स, मतलब रिजल्ट्स आते थे. आई एम it श्योर is super आपके. effective. Yeah. It is super effective. I still do Reiki healing for myself. मतलब I am completely medicine free from last 3 years. उससे पहले का नहीं बोल सकती, उससे पहले इतना अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी थी, बट इंस्टेंटली रिलीफ मिलता है. व्हेन माय सन इज सिक द फर्स्ट थिंग आई डू इज रेकी हीलिंग. उसके बाद इफ देयर इज समथिंग सीरियस देन वी गो फॉर मेडिकेशन, बट यू नो क्योंकि बच्चा है, बट अदरवाइज फॉर माई सेल्फ आई डू ओनली रेकी हीलिंग. मैंने मतलब सो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे रेकी आती है, बट टचवुड आई एम मेडिसिन फ्री. बस मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे मेडिसिन खाई थी. वो एक्चुअली रेकी एनर्जी जो होती है ना, वो जो एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, इट इज ऑलरेडी देयर इन एवरीबडी. ओके, रेकी से बस हम ये करते हैं दैट वी इट्स लाइक सेम विथ लाइफ कोचिंग. ओके, यू गेट अ सर्टिफिकेशन. सो अभी तुम्हें प्रॉपरली पता है, सिस्टमैटिकली पता है कि रेकी क्या होता है. वैसे तुम्हारे पास एनर्जी ऑलरेडी है, यू ऑलरेडी हैव द नॉलेज, यू ऑलरेडी हैव द एनर्जी टू हील. इट्स जस्ट दैट by doing a graduation, by doing the level 1, level 2, level 3, you basically know how it works. You know the symbols, you know the process of making it stronger, brighter, more powerful, and more effective. गॉट And you know what not to do, you know, while doing healing. इट. वो भी Yeah. इम्पोर्टेंट. बिल्कुल. There is a process ना, process is very important. I feel there has to be a good way of doing it because there are universal laws. Okay, जो हमें अगर हम follow नहीं करते ना, suddenly we'll get sick. So अगर आप non-veg खा रहे हैं and then you do energy healing, तो there are some repercussions. Okay, हाँ. इट हैज टू डू विद वेज एंड नॉन इट वेज एज हैज टू, वेल. हाँ. बिल्कुल. मतलब एक जैसे बिकॉज तासीर होती है, लाइक वी आर टॉक, अभी बहुत ही डिटेल में जा रहे हैं. एवरी फूड हैज अ प्रॉपर्टी, राइट? और हर प्रॉपर्टी का एक इफेक्ट होता है. लाइक पीपल हु, देर इज अ एंगर दैट कम्स फ्रॉम फूड बिकॉज तासीर गर्म होती है. देर इज अ रीजन, जैसे जो लोग मिर्ची खाते हैं उनका क्लेंस हो जाता है एक्चुअली, उनको नजर नहीं लगती ज्यादा इफ यू देर ईटिंग लॉट ऑफ स्पाइसेस, नींबू बिकॉज मिर्ची वो हाँ, बॉडी exactly my point. See, we all know Indian culture में already वो सब imbibed है.
इट्स जस्ट दैट वी डोंट नो व्हाई इट इज देयर। अब जैसे लोग डेथ होती है तो बाल पूरे कटवा देते हैं, राइट? डेथ होती है तो मुंडन करवा देते हैं, राइट? वो उसका रीजन ये है क्योंकि बालों में एनर्जी गेट स्टक, नेगेटिव एनर्जी गेट स्टक इन द हेयर। दैट्स व्हाई हेयर कट ऑफन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट या आई थिंक फॉर मतलब women and men. इंडियन कल्चर और इंडिया के जो रिलीजियस रिचुअल्स है ना, दे वर लाइक They're बेस्ड very ऑन द very साइंस, scientific. और वो हमें पता नहीं है, दैट्स व्हाई वी बिलीव कि ये मतलब ऐसे ही करेक्ट, बनाए हुए हैं, करेक्ट। बिकॉज बट दे उस आर। समय जब बनाए गए थे पीपल वर नॉट रेडी फॉर इट, हाँ फॉर द नॉलेज। आई थिंक उस समय ना बहुत कम लोग थे जो उतने इवॉल्व थे टू अंडरस्टैंड द रियल इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। नाउ आई थिंक दे आर इवॉल्व्ड इनफ to readily accept what it means, you know. So I think that's the reason we didn't know that. या सो Hmm. जैसे इंडिया की बात आई, तो यू हैव Hmm. ट्रेवल्ड लाइक सो मेनी Hmm. कंट्रीज, सो Hmm. व्हाट मेक्स इंडिया स्पेशल? I traveled so many countries and I decided I never want to live anywhere in the world but India. Okay, it is ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं see I love my country. The reason is not because it's India. I think because it's my country. You know, I think it is very important to understand that every country is amazing. Okay, मैं आई विल नॉट बी, क्योंकि मैं एनर्जी की बात करती हूँ ना, तो मेरे लिए तो कंट्री का बाउंड्रीज का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, बिकॉज एनर्जी का तो कोई कंट्री नहीं होता, यूनिवर्स का कोई कंट्री नहीं होता। और यू नो देर इज फॉर मी एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन बाउंड्रीज। मैं ऐसा नहीं कि मैं पेट्रोइटिक नहीं हूँ, लेकिन मैं ये नहीं सोचती कि कोई दुश्मन है मेरा जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट फ्रॉम माई कंट्री इज माई एनिमी, बिकॉज आई बिलीव इन एनर्जी एंड यूनिवर्स एंड स्पिरिचुअलिटी। तो मुझे लगता है क्योंकि ये मेरा है इसलिए मुझे प्यारा है। ओके, एंड पीपल हु लव देयर कंट्री उनको वो प्यारा है बिकॉज वो उनका है। करेक्ट, I think what makes this country special is the people here. Okay, because these are my people. This is my family. I can talk in my language. You know, that makes it special. Every country has some good things, some bad. किसी का खाना अच्छा है, किसी का weather अच्छा है, किसी का पहाड़ अच्छे हैं, किसी का बर्फ अच्छी है. I love Switzerland also. But I love this country because there are people whom I love here. I think that's make it special. So गॉट that's the answer. मतलब वो होता है ना कि Hmm. एक बार अगर किसी ने ऐसे बोल दिया कि मतलब Hmm. जहां हम बाहर जाते हैं, तो एक बार किसी ने बोला मैं इंडिया से, तो एक अलग ही वाइब क्रिएट हो जाता है। ओके। हाँ, अरे मैं when I was living in Prague, okay, my boss used to introduce me like this. She is Mitali and she's from India. You know, like it was a, and people will just surround around me. Oh, you're from India. You're where from India? And I was like, अच्छा, मतलब India is such an amazing thing in Europe. People जो इंडिया जाते हैं they are the coolest people. You know, there are people who are doing backpack trip to India. They are considered the coolest people. You know, and imagine someone from India. I was already a celebrity क्योंकि मैं इंडिया से आई हूँ। So बहुत ज़्यादा importance मुझे मिलता था because I'm from India. Oh, so Indians Okay, are valued so outside. very in Europe for sure. यूरोप में, क्योंकि यूएस यूके में ना बहुत इंडियंस है, लेकिन यूरोप में उतने कम है। आई वॉज लिविंग इन चेक रिपब्लिक, तो वहाँ इंडियंस कम है, तो बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती है। पीपल यूज टू आस्क मी क्वेश्चन व्हाट टू विजिट, व्हेन टू विजिट, व्हाट इज द गुड टाइम, व्हाट इज द गुड वेदर, इज इट ट्रू लाइक दिस हैपेंस इन इंडिया, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। सो दे यूज टू, यू नो, दे लव्ड टॉकिंग टू मी। ग्रेट ग्रेट, मतलब इंडिया इज स्पेशल। या वेरी वेरी स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल देयर। जैसे हमारे लिए स्विट्जरलैंड स्पेशल है, यू नो, दैट वर्ड वैसे उनके इटसेल्फ लिए। बर्फ याद हाँ आ जाता है। हाँ 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 हाँ। वादियाँ और याद। मैं I understand why Indians love Switzerland. It is worth loving. I've been there twice. It is worth loving. I'm telling you. जब मैं दोबारा गई इस बार स्विट्जरलैंड, तो मेरा मन कर रहा था मैं खो जाऊं वहां पर, and I should never be found. You know, I just, because even एक छोटा सा, छोटे से छोटा घर is so beautiful. You know, like it's like a fairy tale. But I will never love to stay there unless it is with family, because you know there is no place on this earth without your family where you can be happy. You need your you need your people. अग्रीड अग्रीड। इवन इफ यू अचीव अ सक्सेस एंड अगर हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं है, तो शायद हम उन मोमेंट्स को कुछ नहीं है, नहीं कुछ अचीव नहीं कर है। पाएंगे। मुझे सबसे ज्यादा दुख मोनास्ट्री में जाके यही हो रहा था। ओ गॉड, आई वाज मिसिंग माय सन सो मच।
यू नो लाइक मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे सिर्फ अपने बेटे का चेहरा दिख रहा है, मतलब शिट, मैं माया जाल में इतनी फंसी हुई हूँ, आई कांट इवन मेडिटेट, एंड द वर्स्ट थिंग, आई वाज इवन मिसिंग माय हस्बैंड। मैंने बोला ओ गॉड, अब तो कोई फायदा ही नहीं है यहाँ आने का, बिकॉज आई वॉज मिसिंग देम सो मच। अच्छा, वहाँ फोन अलाउड नहीं, लैपटॉप अलाउड नहीं, कैमराज ऑल्सो अलाउड नहीं, ओके। And I told my husband not to call me because I will not be available. Phones are switched off, and he never did. But because I could not control myself, I had to like pay someone bribe to call my husband because I was missing them so much. Okay, I thought I will be super cool and like I'm going on this spiritual journey and all, and I will be very, very this thing. But no, I was missing them. They were fine. They were enjoying themselves here without me, but I was not fine. So I realized something, that I cannot compromise on this, because it is not going to work. If I think that I can go on a quest of spirituality and all of that, it is not going to happen if my family is not with me. I'm going to do it together. So, yeah, we are women. We are the mothers. Yeah, कैन टोटली फील दैट इमोशन, मतलब yeah, वो yeah. आ जाता है यार, मतलब आ वो जाता है। होता आ और ही मैं जाता सोचती हूँ क्यों ना आए, आई थिंक वी शुड बी प्राउड अबाउट इट, that we want to do everything. We want to run a company, we want to learn, we want to take care of our kids, we want to see them successful, you know. So I think why should we compromise? है। हमें मतलब सब कुछ मैंने चाहिए, हमें सब कुछ सब कुछ चाहिए। चाहिए, सब कुछ चाहिए, और क्यों सब कुछ से कम क्यों करना है यार, सब कुछ से कम क्यों करना है, वाई? एक ही लाइफ है, वाई शुड वी अचीव एनीथिंग लेस देन एवरीथिंग, करेक्ट, राइट? करेक्ट। सो व्हाट स्पेशल एफर्ट्स यू मेक टू बैलेंस वर्क लाइफ? Okay. So I do a salt water bath every single day because I heal so many people. There is a lot of negative energy that comes into my aura. जब आप इतनी प्रॉब्लम सुनते हो ना, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है अपना ध्यान रखना. Okay, to cleanse yourself is the most important lesson that I've learned myself. So I take a hot water salt water bath every single day after, in the evening, okay, before sleeping. It is a must for me. And second thing is I do yoga every day, क्योंकि मैंने ये भी realize किया है that अगर मैं जिंदा ही नहीं हूँ तो फिर कहाँ मैं किसी को help कर पाऊंगी, right? My health is very, very important for me to help people, right? You cannot achieve anything without health. So health becomes priority, even though I'm not very good at exercising and all. मतलब I have to push myself, but it is a must. I have to, every day I have to have a me time. Okay, like only me, myself, and my faltu things that I do. Like I do journaling, I write something, I write poetry, That is not I just faltu. look at, Journaling is not yeah. faltu. It has to be whatever it is, like dancing alone. I dance alone because I think that's thing that keeps me going. I have to be really happy all the time. So I have to keep myself happy. I am my first priority, okay? Because if I'm happy, the whole world around me, I can make sure that they're happy, okay? But I have to be happy. And so I do a couple of things to make myself. One is dance every day, every single day. Take salt water bath, do a little bit of exercise, and fourth, listen to awesome music because music has healing power. Music is something that, music is not that we designed music, okay? जब म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं बने थे तब से लोग डांस करते हैं. यू रिमेम्बर दैट जब वो ऐसे बीच में आग जला के गांव में डांस करते थे लोग, एंड कुछ नहीं होता था, बस किसी भी चीज पे दे वर डूइंग ठप ठप, राइट? So music is something that is created by God. I think sound healing is one area of healing that is not yet explored enough. Okay, उसमें बहुत पावर है, साउंड हीलिंग में बहुत पावर है. सो आई थिंक दैट इज, आई थिंक आई बिलीव इन दैट. Yeah. आई थिंक आई एम गिविंग यू टू मच ज्ञान, आई थिंक. नो. जब हमारे पास ज्ञान होगा तो ही दे सकेंगे, वरना नहीं दे बिल्कुल सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री. तो मैं तो यही बोलती हूँ कि जो जिसके पास प्यार है वो प्यार ही देगा, है ना? और अगर आपके अंदर आप नफरत रखोगे तो फिर आप दोगे ही क्या, राइट? फिर आप वही दोगे ना जो आपके पास है. सो कीप वॉट यू वॉन्ट टू गिव. So because there is so much love inside me, I think every person I meet, I give love, like true form of love, like pure love.
So I think that's एनर्जी because that's what. एक्सचेंज, लव हाँ चाहिए हाँ, तो लव ही एक्सचेंज राइट राइट, जो है वही दो सकते हो ना, आपके पास जो है ही नहीं वो आप दोगे कहाँ से? करेक्ट। आप बोल रहे कि पीपल आर नॉट फीलिंग, माई वाइफ इज सेइंग दैट शी इज नॉट फीलिंग लव्ड इनफ, सम ऑफ द क्लाइंट्स से दैट माई वाइफ इज सेइंग दैट शी इज नॉट लव्ड इनफ। तो मैंने बोला आपके पास है प्यार? डू यू फील? तो बिकॉज इफ यू डोंट लव योर सेल्फ, जब आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो वो प्यार आएगा कहाँ से? टू गिव, यू कैन ओनली गिव व्हाट यू हैव, करेक्ट करेक्ट राइट? या। एंड मतलब हम्म यू हैव डन सो मेनी थिंग्स, आपने हम्म इतनी सारी सक्सेस 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 देखी है, इज हम्म एनी पॉइंट इन लाइफ की जब आपने हम्म। फेलियर फेस किया है? बहुत बार, ऑल द टाइम आई थिंक। मुझे लगता है बाहर की दुनिया फेलियर, को वो चीज नहीं पता चलती है, राइट? मुझे तो एक्चुअली मुझे ना फियर ऑफ फेलियर नहीं है। आई थिंक एज अ लाइफ कोच एक कॉन्सेप्ट तुम्हें भी पता ही होगा। आई डोंट हैव द फियर ऑफ फेलियर, आई हैव द फियर ऑफ सक्सेस। फियर ऑफ सक्सेस है मुझे प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो मे बी आई बिकम लेजी। ओके, maybe I'll become less. लेजी हाँ, laziness another thing, right? Maybe I'll try lesser, you know, जब हो सकता है मैं कम एफर्ट डालूंगी, और आई विल नॉट डू इनफ, और आई विल नॉट बी सीरियस विद माई क्लाइंट, और आई विल नॉट डू वर्क पैशनेटली इनफ। मुझे आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ फेलियर, आई एम स्केर्ड ऑफ सक्सेस। what if मेरा सक्सेस से दिमाग खराब हो जाए एंड आई गो अगेंस्ट माई पाथ एंड आई बिकम मोर मनी सेंट्रिक, और आई डोंट नो फेम सेंट्रिक, और मुझे इस बात का डर है। मुझे फेलियर का तो कोई डर सो ही नहीं है। पीपल हैव जब मैंने दैट खुद ही फियर। सब कुछ छोड़ के रीस्टार्ट कर लिया, आई लेफ्ट एवरीथिंग, राइट? 16 साल आपने, 15 साल की स्टडीज और 16 साल का जॉब, ऑलमोस्ट 30 years ऑफ योर लाइफ जो आपने इन्वेस्ट किया, वो सारा आपने इन्वेस्टमेंट फेंक दिया लिटरली पानी में, एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। ओके, दैट मीन्स कभी भी, मुझे कभी भी कोई डर ही नहीं है फेलियर का, क्योंकि कभी भी लाइफ, इफ द लाइफ विल ब्रिंग मी ऑन द फुट पाथ ऑल्सो, आई कैन रीस्टार्ट, राइट? क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ एक बार रीस्टार्ट। आई कैन बिल्ड माई सेल्फ फ्रॉम ग्राउंड अप, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ दैट। जब आई डिड इट टू माई सेल्फ, राइट? तो मुझे अभी कुछ डर ही नहीं है, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग। ओनली थिंग आई एम स्केर्ड ऑफ इज फियर ऑफ सक्सेस, दैट्स ओनली आई थिंक आई एम स्केर्ड ऑफ। आई थिंक वो मुझे लगता है कहीं ज्यादा सक्सेस है, आई डोंट लूज द पीपल दैट आई लव, आई डोंट लूज द फ्रेंड्स दैट आई मेड ऑल दिस, बिकॉज फ्रेंड्स से, फैमिली से बहुत पावर आती है, स्पेशली विमेन फ्रेंड्स। I'm telling you blindly and brutally that women friends are very very useful, you know, because women को actually लड़कों से ज्यादा लड़कियों का validation बहुत important है। एवरी वुमन वांट्स दैट, यू नो। अगर आपका हस्बैंड ब्यूटीफुल बोल दे और आपकी कोई फ्रेंड ब्यूटीफुल बोल दे, फॉर यू योर फ्रेंड्स दिस थिंग विल बी मोर इम्पोर्टेंट। हस्बैंड को पता ही क्या है फैशन के बारे में दैट्स व्हाट यू विल थिंक, राइट? इफ योर फ्रेंड सेज वाओ यू आर लुकिंग गॉर्जियस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू। फॉर मी इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि वो बहुत रेयरली कॉम्प्लीमेंट मिलता है मुझे। करेक्ट करेक्ट, दैट्स आल्सो देयर, राइट? फिर so what has happened, so that's what I said, like मुझे फेलियर बहुत बार हुआ है अनीता, आई हैव सीन फेलियर, ओके? लाइफ कोचिंग में भी समटाइम्स यू वर्क सो हार्ड ऑन अ क्लाइंट और कोई चेंज नहीं आया, बिकॉज आई हैव डेल्ट विथ ड्रग एडिक्ट्स, अल्कोहलिक्स, ओके? ये भी मेरे क्लाइंट्स रहे हैं, और आपने पूरी मेहनत करी, पूरा दिलो दिमाग से काम किया, एंड यू डोंट सी रिजल्ट, and because you're so passionate about your work now, it really hurts you, okay? पर मैंने ये भी realize किया over a period of time, there are people you cannot help, okay? So you have to accept it and move on, ठीक है? There are clients मैं मतलब it's disappointing, अभी बोल रही हूँ तो भी दुख हो रहा है, that there are clients whom I really wanted to help and could not help. They also tried, I also tried, but it didn't work, right? Alcoholism, drug abuse is something that sometimes they can't get rid of it. तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता है, फेलियर वाला फीलिंग आता है, दुख भी होता है एक दो दिन, एंड देन देखो सक्सेसफुल और फेलियर लोगों में यही फर्क है कि हम भी रोते हैं, लाइक आई सेड इन माय स्पीच, लेकिन एक दो दिन रोते हैं दरवाजा बंद करके, जो भी रो लो, दुखी हो लो, व्हाटएवर, नेक्स्ट डे बैक टू वर्क, नेक्स्ट डे अनदर क्लाइंट, एंड यू वर्क विद द सेम पैशन, ओके? Yeah. और फिर रिग्रेट कोई नहीं रखनी है, क्योंकि यू शुड ट्राई एवरीथिंग, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड।
और एक बार सब कुछ ट्राई कर लिया और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, देन देयर आर नो रिग्रेट्स, बिकॉज आप अपने बेस्ट से ज्यादा तो कुछ कर ही नहीं सकते ना. कैन यू डू एनीथिंग मोर देन योर बेस्ट? बिकॉज इफ यू ऑलरेडी गिवन योर बेस्ट, देन जस्ट लीव इट आफ्टर दैट. एंड तो मिताली दी यू से कि हम्म. यू आर हम्म. लाइक, एक आपकी हम्म. एक हम्म. क्वालिटी है लेजीनेस. ओ तो या हाउ डज बिगेस्ट इट लेजी. हाउ डज इट बेनिफिट यू? मैं बता रही हूँ कि लेजी लोगों को ना बहुत ही अंडररेटेड है. यू नो द क्वालिटी, ये लेजीनेस की जो क्वालिटी है ना, आई थिंक क्वालिटी ही बोलूंगी मैं उसको, ट्रेड भी नहीं बोलूंगी. इट इज अंडररेटेड. शायद वॉरेन बुफे ने ये बोला था या फिर आई थिंक बिल गेट्स ने बोला था, आई डोंट रिमेम्बर, किसी एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन ने ये बोला था दैट इफ आई हैव द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम and I have very less time, I will not give it to a hardworking person. I will give it to the most lazy person to do it. Because the most lazy person will find the smartest way to do it. You getting my point? जो So लेजी it's होगा an ना, inspiration वो for all the सोचेगा lazy इसको people. कम से कम एफर्ट में कितना अच्छा किया जा सकता है. All the things that we have is all the inventions that we have. It's only because of lazy people. क्यों? पहले जो हार्ड वर्किंग लोग थे वो पत्थर भी तोड़ते थे हाथ से, और आटा चक्की में आटा भी पीसते थे, और यू नो ब्रेड्स हाथों से बनाते थे. यू नो दे वर डूइंग. हार्ड वर्किंग लोगों ने तो कभी किसी का भला किया ही नहीं. दे कांट हेल्प देमसेल्व्स. हाँ, वो लोग तो कोई. ओनली द लेजी पीपल आर द वंस जिन्होंने नई नई चीजें इन्वेंट करी, क्योंकि उनको काम नहीं करना था. राइट. राइट, दे वांटेड टू मेक लाइफ इजियर. और लाइफ इजी, कभी हार्ड वर्किंग इंसान को लाइफ इजी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बहुत बिजी है हार्ड वर्क करने में. लाइफ इजी किसको बनानी है? जो लेजी है. राइट. करेक्ट, करेक्ट. राइट. So सो there is a आई थिंक benefit of being lazy. awesome benefits of being lazy, because you will always work smarter. Hard work का जमाना गया. You have to be, see, the lazy person does not want to work 12 hours in a day. I don't want to work 12 hours in a day. और मुझे पता है कि मैं 1-to-1 सेशंस लेती हूँ, तो मेरा 5-6 घंटे के बाद आई कैन नॉट, इट ड्रेन्स मी. राइट. तो अगर मुझे सिर्फ 5-6 घंटे काम करना है, पर मुझे दुनिया में बहुत सारे लोगों की लाइफ को टच करना है, तो मैं कैसे करूंगी? I will do group sessions. I will create an app. I will have pre-recorded